this. I think we completed till over here. Okay, so we'll start from this position of xt, vt, and all this kind of things. Let me just decrease sound. Yeah, yeah. So let us just see this. So we completed. 1 minute. Our velocity equation. I do not think so. Let me just check. Yeah. Just started it directly. Okay, so now you can see that. So we completed till over here, like writing x is equal to a sine omega t and all means what are the position equation? Let's suppose let us just have a quick recap of the things which we have done. So if there is an SHM, means if a body, any kind of body, let me just adjust this. Let us do a quick recap of the things. So we got to know, we first thing was when a body does a SHM, we have two things, simple harmonic motion, then the force is given as minus of kx, means there is a restoring force which is always appearing over there. Okay, now let us just think of this case. Let's suppose if I have a spring attached with the block of mass m, and then if I try to displace it, okay, let us just try to displace it. So we got to know that the force which appears over there is minus of kx, and this body will start doing SHM. The SHM motion is given, or it is drawn once again on a linear line, because we are studying about linear SHM, and it was told that it has two extreme points, one towards right, one towards left, and then there was a mean point where the net force was zero, and from where the motion actually starts, isn't it? This is the point. If the body is fully doing SSM, then mean point is a position of maximum velocity, and extreme point is a position of minimum velocity, or you can say zero velocity. The gap between this maximum and minimum is called as amplitude. क्या बोलते हैं इसे अपन? Amplitude. Many people say that maximum displacement is called as amplitude, but the meaning of maximum displacement means the gap between zero velocity and maximum velocity. Is that clear or not? Yeah, then we got to know that we have many wave equations. One is acceleration is equal to minus of k by m into x. And we told that this omega square will be written as root under k by m. We explicitly said that. We do not know what it is actually. We'll talk about that in a greater sense a little bit onwards. Okay. Now, omega square was given root under k by m. If omega I got sorry. Only omega square is just k by m. Correct. Then we told that from here, if we integrate and all, then we got to know that whatever at any time, or it not at any time, at any displacement, at any position from the mean point, if we want to know the velocity, then velocity was given as omega root under a square minus x square. This was our velocity equation, isn't it? And then we told that if you want to know, means what is this position, then if I know the velocity at this position, then we can know the position at this time or not, because at t is equal to 0, if I'm starting from here, I'm definitely at some position at t is equal to time t. So this t is equal to time t was given as xt, and that was given as a sine omega t plus sine inverse x naught by a, isn't it? Now the question was arising that what is this x naught by a? We are going to talk in a depth today and a little bit right now, isn't it? Okay, so let us just see that when we do a SHM,
Let's suppose if I'm doing a SHM. Okay, this is my extreme point, and this is my mean point. Now, if the block starts from t is equal to 0 from here, that means the position means initial position is also 0 or not? Kind of 0. Now, if the body comes over here at some time t, then what we say that xt, which was written as a sine omega t plus sine inverse x naught by a. Yeah, so you look over here explicitly that when we did that integration, x naught was the initial displacement, isn't it? So x naught was my initial displacement, which used to tell us that what actually is happening at t is equal to 0. Now, if x naught at t is equal to 0, if x naught was equal to 0, then this equation just changes to x is equal to a sine omega t, isn't it? But this is only for mean point. Yeah, if the SHM starts from the mean point, okay, is that clear or not? So that is why this term was given a name and it was called as phase constant. क्या बोलते हैं इसे अपन? जिसको अपन phi से डिनोट करते हैं, क्या चीज से डिनोट करते हैं? ध्यान से देखो, तो अगर अगर बॉडी यहां से स्टार्ट हुआ रहता टी इज इक्वल टू 0 पे, तो एसएचएम इसको पकड़ के होती ना, यहां से स्टार्ट हुई होती ना. So there is an initial gap from the mean point or not. We are going to require to bring it. If I want to write the system equation, we need to bring this block to once again t is equal to 0 or not. Means that x is equal to 0 or not. So that is why the initial gap which is present, we call it as phase constant. Are you able to get me or not? The point is, the relation is that since if my body starts from some another random point, so what will happen is that the SHM will start. SHM is still dependent upon these amplitudes. Are you able to get me or not? But the question arises that if it is dependent upon these amplitudes, we need to consider this as our mean point or not. Our mean point is not this over here, isn't it? So if your mean point is not that, you need to bring this body once again to the mean point to write the equation of SHM or not. Yeah. So basically, all of these things are made only on the basis that I start from the mean. All these equations, whatever these equations are there. So when you shift towards right or when you shift towards left or wherever you go, that must be written with respect to this origin point. मतलब ऐसा समझ लो, ये एक सिंपल सी भाषा बताता हूँ. Not the reference point, mean point. Okay. Are you able to digest? See, in a simple language I'll tell you. देखो ध्यान से देखो कि भाई एक बात बताओ. मान लो जैसे एक रूलर स्केल है, ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. अब मान लो गलती से तुम्हारा रूलर स्केल का 0 वाला टूट गया. क्या हो गया? इट गॉट ब्रोकन. ठीक है. अब तुम्हें मेजरमेंट कहाँ से करनी है? 1 से. कहाँ से करनी है? अब मान लो तुमने किसी एक ब्रिक का या कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये रूलर स्केल लगाया. तो if you put 1 over here you find out 5. So is the length is 5 meters? It is how much? 4 meters. You need to bring how you write it, that 5 meters minus 1 meter, which is the extra length which has been covered by the initial starting point or not, apart from 0. So this length, this gap is called as phase. इसी को क्या बोलते हैं बेटा? नाम दे दिया गया phase. ठीक है. क्योंकि इस phase किस लिए नाम दिया गया? क्योंकि all the motion starts from the mean point. Is that clear or not? Is that clear? और इसका नाम है फेज कांस्टेंट. और ये जो पूरा टर्म है एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी
प्लस फाइव, इस पूरे चीज का नाम है बेटा फेज। सिर्फ वर्ड नाम है क्या? फेज। उसका नाम है फेज कांस्टेंट, द अमाउंट ऑफ गैप विच इज प्रेजेंट फ्रॉम इनिशियल टाइम इंटरवल एंड द होल टर्म बिकॉज द बॉडी इज ऑसिलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस। फेज क्यों नाम दिया गया, इसके पीछे भी रीजन है। देखो ध्यान से देखो, तो अगर हम साइन का ग्राफ देखते हैं, अच्छे से बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक ना। इफ वी लुक ऑन टू द साइन ग्राफ, then we know that the graph of sin x is drawn like this because it is 0 at 0, maximum at pi by 2, then minimum at once again 0 and minimum at 3 pi by 2 and once again 2 pi। तो ध्यान से देखो, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, या ये ग्राफ पूरा का पूरा इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं, it is telling that the whole thing which had started from here will once again start to repeat from here or not. Once again it will start to repeat, means you look over there, after a total gap of time interval of 2 pi angles or 2 pi radians, the whole thing which was started initially over here starts to repeat once again with the same dimension, with the same thing over here also or not. इसीलिए ये जो गैप है जिसके बाद सेल्फ रिपीटिशन हो रहा है, कितने टाइम पीरियड बाद जो हम रिलेट करके बताएंगे, दिस होल गैप का नाम है बेटा फेज। क्या नाम है? मींस जो गैप यहां से लेके इस एरिया के अंदर जो कवर हो रहा है ना, उसी का नाम है तुम्हारा फेज। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? क्योंकि क्योंकि उस आफ्टर दैट इंटरवल ओनली द होल पोजीशन स्टार्ट्स टू रिपीट इटसेल्फ। मेरी बात समझ में आ रही है? Is that clear? So we'll write explicitly some definitions of this phase and phase constant. We'll write some definitions. Okay, just wait for 1 minute because I think it's a better idea to give some definitions to this. है ना? चलो तो 1 minute. Let us just provide some definition to this kind of terminology so that in future we can have a greater idea about that. Take 1 minute. Um, there is no such definition in the book. What the hell? They do not provide any kind of, actually in the book they do not provide any kind of definition of phase or phase differences. Okay, they just tell what is the meaning of phase। ठीक है, मतलब एक वर्ड है जो हम यूटिलाइज करते हैं इनिशियल टाइम का, आपको बस इतना समझ लो। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ा जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें मालूम चल गया एक्स टी के बारे में मालूम चल गया। अच्छा, अब एक्स टी साइन को फॉलो करती है, साइन ग्राफ को फॉलो करती है ना। ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव मीन्स अगर हम यहाँ पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू देखें तो वो 1 है ना। मैक्स वैल्यू ऑफ साइन इज हाउ मच? 1। तो ध्यान से देखो, तो जो पोजीशन है, द पोजीशन मैक्स वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी व्हाट? प्लस एम्पलीट्यूड या माइनस ऑफ द एम्पलीट्यूड, बिकॉज मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इज आल्सो हाउ मच? माइनस। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? So let us just bring that, let us just do that in some conclusive way. Okay, now check into this. So we know that this is a sine graph which is represented as x is equal to a sine omega t plus phi. We will get to know how to write this phi. We'll see so many things regarding that. But before that, let us just develop. So we got to know x of t, we got to know v of x, isn't it? Then we got to know x of t, v of x, and acceleration dependent upon position. But we didn't got vt and at, isn't it? So two things are still left. One of that thing is vt graph.
VT equation, isn't it? Velocity time equation. So look over here. If I know my position dependent upon time, velocity time equation is very easy. That is just dx by, yeah. So it becomes what? A omega cos omega t plus phi. Are you able to get me or not? Is that clear? So VT graph is VT equation is just a omega cos omega t plus phi. मेरी बातें समझ में आ रही हैं? दूसरी बात ध्यान से देखो. If I look into that AT equation, the third equation is our acceleration time. Yeah, I'll further differentiate it. So if I further differentiate it, what I get, mm, A is equal to dv by dt. It becomes minus a omega square sin omega t plus phi. यही हो जाएगा ना? डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है ना? sin omega t plus phi का क्या होगा? cos omega t plus phi. Is that clear? ठीक. अब ध्यान से देखो. तो क्या मेरा यहां से इन तीनों इक्वेशंस में से एक चीज समझ में आएगा, is my acceleration can be just written as minus of a omega into the displacement, sorry, a omega square, no, not a, minus of omega square into the displacement x or not. ध्यान से देखो, इन कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशंस एंड द सेकंड इक्वेशन, है कि नहीं? अच्छा, एक्सेलरेशन होता क्या है? d2x by dt square, that is written as minus omega square x. So this equation which is written over here is called as equation of SHM. इसी को क्या बोलते हैं अपन? The, हाँ 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 हाँ. If you look over here, if you just compare first and second equation, look over there. You only say me. See that this, if I just write a is equal to minus, uh, just that's all. Just compare that, because a sine, no, look over here, a sine omega t plus phi is x over there. Replace that, a is equal to minus omega square x. Is that clear? So that means acceleration is d2x by dt square, which must be written as omega square x. है कि नहीं? Basically, why this equation? The question arises, ये equation का मतलब क्या है? बहुत लोग मतलब SHM को ना ऐसे इक्वेशन में छोड़ देते हैं, बट इन सब के पीछे रिलेशंस है. तो d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं d2x by dt स्क्वायर प्लस k by m इंटू x इज इक्वल टू हाउ मच? 0. ये इक्वेशन है या नहीं है? इसको हम ध्यान से देखिए तो ये डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है. अगर तुम बहुत मैथमेटिक्स में एडवांस हो जाओगे, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़ोगे, तो ये जो डबल डिफरेंशिएशन वाले इक्वेशंस है ना, इनको एक इंटीग्रेशन करने की टेक्निक होती है. ठीक है? ये बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास कोई भी, अगर कभी भी किसी भी फिजिक्स का, कोई भी फिजिक्स का टॉपिक का अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, then it is a kind of a solution, it is a kind of a, मतलब अब एसएचएम हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि पार्टिकल कहां पर किस टाइम पे किधर की ओर जा रहा है कि नहीं. तो जैसे ही अगर हम उसको काइनेमेटिक्स से रिलेट करने का कोशिश करेंगे, दिस इज नॉट फॉलोइंग ऑलमोस्ट अ काइनेमेटिकल इक्वेशन, इजंट इट? This is following a totally different thing. The question arises how you are going to relate it, how you are going to find the acceleration, how you are going to find the position. All these things are brought and done by this equation. तुम्हें बस इस इक्वेशन को जानना है, अभी इसके बारे में डेप्थ में नहीं जाना है, इसको सॉल्व नहीं करना है. इट्स जस्ट अ equation which can give us, if we integrate it once again, it will give this relation x is equal to a sin omega t plus phi. Okay, so that means that this equation tells us that yes, we have a way to find any kind of position, any kind of velocity, any kind of acceleration, because these equations involve all those kind of things. Okay, ठीक है? तो इसीलिए
इस अब ध्यान से देखो तो इसका नाम दिया गया, के का नाम दिया गया, इट वाज कॉल्ड एज एसएचएम कांस्टेंट। ठीक, ओमेगा का नाम तुम्हें मालूम नहीं है, इसका नाम पड़ा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और डेप्थ में बात करेंगे बाद में क्यों एंगुलर फ्रीक्वेंसी कही गई। और एम का मान, हाँ हाँ, no, omega is a angular velocity in kinematics. Okay, but it is also the same kind of denotation is there in SSM, and we call it as angular frequency. But they can't. They are not interrelated. Remember that. Is that clear? There, there will be a time when where we will come to know that how they can be interrelated. Okay. ध्यान से देखो तो ओमेगा इन एंगुलर वेलोसिटी, what is its dimension? It is v by r, isn't it? That is rad per second almost. That means 1 by time only or not. So yes, the dimension of angular velocity, some we will come to know when we can take angular velocity similar to angular frequency. Okay, the dimension of angular velocity is exactly similar with the dimension of angular frequency, and they are almost equal, but in certain cases only. Go ahead or not, and we'll see when they are going to be almost equal. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो अपने को एक्स टी वी टी ए टी सारे मिल गए, लास्ट बचा है ए एक्स इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? एक्सेलरेशन पोजीशन इक्वेशन, यही है ना। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो नहीं नहीं नहीं, ए एक्सेलरेशन पोजीशन इक्वेशन नहीं, अपन का बच गया एक्स इक्वेशन भी तो लगा दिया ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फोर्थ भी तो हो गया। Yeah. So what is left with? There is a velocity acceleration equation which is left with, isn't it? ध्यान से देखो तो। Yeah. What is I'm left with is that velocity acceleration relation. So let us just relate that. ठीक, अब ध्यान से देखा जाए तो vt is a omega sin omega t plus phi, है कि नहीं? और at is a omega square cos ओमेगा टी प्लस फाइव, सॉरी उल्टा लिख दिया, दिस इज कॉस दिस इज साइन। Minus, yeah, it is minus. Okay, now the question arises that how you are going to relate them. Can you tell me how I can relate them? Any idea? Can we write these equations, the velocity equation as v by a omega cos omega t plus phi, or acceleration by a omega square as minus sin omega t plus phi, है ना? Can I take the squares of both of them? When we take the square of both of them, what it becomes? B square a square omega square plus acceleration square a square omega to the power of 4, and sine square theta plus cos square theta is how much? 1. And this is your equation of velocity acceleration. क्या इसका रिलेशन है? Velocity acceleration, है कि नहीं? Yes, so let us just talk about that in this for this in a greater sense. Let us just think about this. Okay, so first we'll start with the little bit of a greater analysis of SHM, but we'll do it little bit later. अब ध्यान से देखना कि अपने पास तीन इक्वेशंस हैं, एक्स टी। पहले अपन टाइम वाले इक्वेशंस लिखेंगे, क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही है ना? अच्छा, वेलोसिटी टाइम क्या है? ए ओमेगा ओमेगा टी प्लस, यस, और एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट क्या है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। इज दैट क्लियर और नॉट?
है ना। तो ये तीनों तो हमें मालूम है। अब पॉइंट आता है कि लेट अस जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज थ्री, हाउ द ग्राफ विल बी ड्रॉन फॉर देम। लेट अस जस्ट टॉक अबाउट दैट। ओके, ठीक है ना। देखो ये क्या चीज का है, एक्स टी का वर्सेस टाइम, this is velocity time versus time, this is acceleration time versus time. Are you able to get me or not? अब ध्यान से देखो the maximum value of position can be either the plus amplitude or minus amplitude, है कि नहीं, है ना। और ग्राफ साइन है तो जीरो से स्टार्ट होगी, है कि नहीं। तो जीरो से स्टार्ट होते हुए ग्राफ कैसे आएगी, किस तरह की आएगी, है या नहीं है। ठीक। अच्छा, वेलोसिटी टाइम में क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। कॉस ओमेगा टी तो कैसा स्टार्ट होता है, वो उसकी जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, जीरो तो नहीं होती है। इज दैट क्लियर और नॉट। नीचे क्यों होगा, ऊपर रहेगा ना। वो नीचे कैसे हो सकता है, कॉस की वैल्यू जीरो पे वन होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर। वन मिनट, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस, ऑलमोस्ट सेम ही है ना। अच्छा इस पे एक एक मिनट, सॉरी वन मिनट, आई हैव drawn this graph now. I have to divide this into 1 minute. These are the angles of pi by 2. ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो cos की ग्राफ यहाँ पे क्या है बेटा, मैक्सिमम। ठीक, और पाई बाई टू पे क्या हो गई, जीरो। पाई पे फिर से क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। फिर से टू पाई पे क्या हो जाएगा, सॉरी थ्री पाई बाई टू पे क्या हो गई, जीरो। इज दैट क्लियर और नॉट। सो दिस इज जीरो, याद रखो, जीरो, पाई, टू पाई, 3 pi. This value is pi by 2. This value is 3 pi by 2. Is that clear? मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब ध्यान से देख, तो ग्राफ कैसा आया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम, मिनिमम। अरे यार ये बड़ा दिक्कत करता है यार। That's why I crop my image and directly put it. But it's better to talk little bit and then put it in the something like that. Is that clear? ठीक है, चलो अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ अभी सही, चलो ठीक है। Is this clear or not? So this is the velocity graph. Means when the position is zero, I have the maximum velocity. Position कब है, zero. Position जब zero है तो velocity कैसी है, maximum उस time पे. Is that clear or not? And then if we talk about the acceleration, acceleration is negative. Acceleration कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको समझना है। क्योंकि देखो, दिस इज फॉलोइंग साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ओनली, मींस व्हाटएवर द ग्राफ एक्स टी इज फॉलोइंग दैट ओनली, बट व्हेन माय पोजीशन इज पॉजिटिव, yes, acceleration is negative. Are you able to get me or not? Is that clear? So this is the graph of acceleration. Now look over there. If I see that, if I see in the position and velocity, if I compare the graph of position and velocity, what do we see? Is velocity is running faster than position or not? When whenever look over there, when the velocity, when the position was zero, my velocity is what? Maximum. यस। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अहेड ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट बाय एन एंगल ऑफ हाउ मच, पाई बाय टू। ध्यान से देखो, तो ये एंगल, ये जो 90 डिग्री का शिफ्ट आ रहा है वही है ना, है कि नहीं। ठीक। अच्छा दूसरी बात हम ध्यान से देखें, तो अगर हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वंस अगेन लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज अहेड और एक्सेलरेशन इज अहेड, बताओ तो कौन बड़ा है।
Which one is ahead, acceleration or velocity? If I talk velocity only, how? Tell me. Once again, when the acceleration is zero, velocity is still maximum. Are you able to get me or not? But look over there. When the velocity is minimum, acceleration is maximum in the opposite direction or not? Are you able to get me or not? So you have to see that also. So here velocity is not maximum here. For which look over there. When the position was zero, velocity was maximum. Very very good. When the position is maximum, velocity is zero. Is that clear? When the position is null, once again the velocity becomes maximum in opposite direction. But here if you look over there, when the velocity is maximum, acceleration is perfectly zero. When the velocity is zero, acceleration is once again maximum. Are you able to get me or not? In the opposite direction? So that is why acceleration is ahead of velocity by how much angle? Pi by 2. And that is in which direction? Opposite direction. So that is why, but in opposite direction, लिख लेना, but in opposite direction. Are you able to get me or not? ठीक है, तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? लेट अस जस्ट सी दैट हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट. बेसिकली इसके लिए इन तीनों को हम एक ग्राफ से रिलेट करते हैं एंड वी कॉल इट एज द ग्राफ ऑफ एवीटी. क्या बोलते हैं इसे अपन? द ग्राफ ऑफ एवीटी. दिस इज पोजीशन of the SHM. This is here the velocity which is running ahead by how much angles? Pi by 2. Are you able to get me? And this is my acceleration of the SHM which is running back with the phase difference of how much? Pi by 2. ध्यान से देखो तो है या नहीं है? ठीक है. सबसे ahead, सबसे अनऑर्थोडॉक्स वे में कौन जाता है? वेलोसिटी. whenever your position is towards right, acceleration is towards left. whenever the position is towards left, acceleration is towards which side? Right. Are you able to get me or not? This is the diagram which tells us how the SHM occurs, and that's what we call as analysis of simple harmonic motion. मेरी बात समझ में आई या नहीं है? So let us just talk. So we got about XT means we have done the time dependent relation graph. Let us just see that how actually it tells about, or how actually it makes us understand about the SHM nature. We will see that. So these are my two extreme points. Okay. और इनके बीच में एक मेन पॉइंट है. ठीक. अब जब मैंने ब्लॉक को मेन पॉइंट पे रख दिया, ठीक है, अभी ध्यान से देखना. इस ये जो जो चीज मैं एनालिसिस सिखा रहा हूँ ना, इट्स द टू मच गुड थिंग विच यू विल गेट राइट नाउ. ठीक है, लेट अस जस्ट टॉक अबाउट इट. ठीक है, अब मान लो कोई एक ब्लॉक है जो कि एसएचएम कर रही है. क्या कर रही है? एसएचएम. ठीक. इसको मैंने मेन पॉइंट पे लगा दिया है ना. ब्लॉक को एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी राइट के डायरेक्शन. किधर? किस डायरेक्शन में? राइट की डायरेक्शन में. व्हेन दिस ब्लॉक विल स्टार्ट फ्रॉम मेन पॉइंट, इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट. अच्छा, जैसे जैसे इधर जाएगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? मिनिमम या मैक्सिमम? ब्लॉक जब यहाँ पे आएगा, वेलोसिटी क्या हो गई इसकी? जीरो. ध्यान से देखो तो जो अपोजिट डायरेक्शन का स्प्रिंग फोर्स है, या रीस्टोरिंग फोर्स लिखो, स्प्रिंग फोर्स की तो बात ही नहीं होती है. रीस्टोरिंग फोर्स, जो अपोजिट डायरेक्शन की रीस्टोरिंग फोर्स है, वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? इंक्रीज हो रही है. एज माई डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट्स टू ग्रोज, द रीस्टोरिंग फोर्स इज इंक्रीजिंग. ठीक. रीस्टोरिंग फोर्स इज इंक्रीजिंग. अच्छा, जब रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? बताओ. Opposite direction. Very very good. Basically acceleration is increasing. Acceleration की magnitude धीरे धीरे, as we know that f was given as minus of kx, और यहाँ पे acceleration, mass into acceleration was minus of kx. acceleration की value क्या होती है? Minus of k by m into x. So this means that towards this direction, what is increasing? The magnitude of acceleration is increasing.
बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में? बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ध्यान से देखो, right now we only got to know that when x is increasing towards right, acceleration will increase towards left. Are you able to get me or not? So this is what actually we get from the position time graph. Okay, now next thing, when I start to return from here, okay, let us just return. Once again, when you will return, then velocity will increase and acceleration decreases. Acceleration क्या कर जाएगा? Decrease, है ना? क्योंकि धीरे धीरे पोजीशन क्या हो जाएगा? घटते जाएगा. आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? तो वेलोसिटी इंक्रीज करके एक्सेलरेशन क्या हो गया? डिक्रीज. एंड वंस अगेन व्हेन वी गो फ्रॉम हियर टू हियर, what happens? Velocity decreases because this is a position of Vmax, but acceleration increases. And once again when we will return, means if we complete one time period, velocity increases and acceleration decreases. So remember that this increase and decrease of acceleration is happening in which direction? Opposite direction. किस directions पे हो रहा है? Opposite direction में. So this was actually provided by, हाँ, this was actually provided by this equation, that if the position increases towards right, acceleration increases towards left. If the position decreases towards right, acceleration starts to decrease towards left. Are you able to get me or not? मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और इसको, और let us just talk about now, as we talked about xt, vt and at. Now let us just talk about bx, ax and ab. So let us just talk about first bx. We know that velocity x relation is v is equal to, for any kind of system, it says that velocity is exactly equal to omega root under a square minus x square. Let us just see what is the meaning of that. So can I just write v square is equal to omega square a square minus omega square x square, है कि नहीं? अब मैं इसको इधर लेकर आ गया, इक्वेशन क्या बना? v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. अगर मैं सबको ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो इक्वेशन क्या आएगा? v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया तो बचेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एंड दैट मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1 और नॉट, है कि नहीं? अच्छा ये है क्या चीज? और एनीवन आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो लुक ओवर हियर. Is this an equation of SHM? Yes, the answer is some kind of equation of SHM. But look over this particular equation. ये जाना जाना सा लग रहा है. As we know that x square by a square plus y square by b square is equal to 1. हाँ. That is an ellipse equation. That's an ellipse equation, not a straight line equation. Is that clear? कौन सी equation है ये? So as we know that this is an ellipse equation. So that means if I have velocity position graph, then definitely I will have which kind of graph? Ellipse graph. कौन सी graph होगी? ठीक है. अब तुम खुद सोचो, जो पोजीशन होता है वो माइनस ए टू प्लस ए ही वायरी कर सकता है ना? Let us just consider that. Let us just take that this is position and this is minus a and this is which way? Plus a. अब एलिप्स कैसे बनता है? कोई भी एलिप्स जब बनाते हो तो कुछ इस तरह का एलिप्स बनता है कि नहीं? है ना? अब ध्यान से सोचो, अगर हम एसएचएम को ध्यान से देखें तो अगर मान लो ये वेलोसिटी है तो एलिप्स जो बनना चाहिए, लुक ओवर हियर,
this term is bigger or this term is bigger? Omega square a square is bigger, isn't it? So I'll tell you one thing. Let us just, if I write x square by a square plus y square by b square is equal to 1, then the graph is drawn like this way. Okay. Where, yeah, sorry, this is b and this is what? A. Are you able to get me or not? So if A is bigger, then it will be drawn like this. But if A is less, the graph will be drawn like this. Is that clear? So look over here. Here this is bigger. So graph is a vertical ellipse, isn't it? But in SHM, look over there. There is a square over there. There is which is there is what? A square. So is it possible to get a negative value of velocities? Is it possible? ध्यान से देखो, अगर हम एसएचएम में ध्यान से देखें तो जैसे ही पार्टिकल के पास नेगेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, लुक ओवर देयर, लुक ओवर द पर्टिकुलर 1 minute, see this thing, the velocity can be either maximum or either zero. Is it possible to get a negative velocity? No, the negative velocity is not possible with respect to position. That's why the graph of velocity time is and just a upward ellipse. क्या बनता है? इसको थोड़ा सा इरेज मारते हैं. क्या बनता है? सिर्फ upward. Tell me. See, the graph will be whole upward and downward. We know that. But as we know that it's not possible to get a negative velocity, down of this will be a negative velocity factor or not. So that is why we have always which kind of ellipse? Upward ellipse. Means half of the ellipse is the graph of velocity versus position, where the highest value is a omega. मेरी बात समझ में आई या नहीं है? Is that clear? Here, as we can see, that with respect to time, I can have a negative velocity because it is showing about the direction thing. Okay. But with respect to position, it's just a magnitude. Are you able to get me? And that is why it cannot be negative in nature. ठीक है? आगे बढ़े? Now, let us just talk about uh, once again acceleration position graph. ठीक है? Sorry, acceleration velocity graph. अपन ने अभी acceleration और velocity को भी relate कर लिया था ना? वो भी क्या आया था? एक ellipse ही आया था ना? देखो तो ये velocity acceleration graph is a kind of ellipse or not? So if we draw once again, we'll get which kind of ellipse. If you take acceleration or whatsoever you wanna take, you will get a velocity means a elliptical graph. लिख लेते हैं इसको. ये क्या मिलने वाला है once again? है कि नहीं? But look over this acceleration versus displacement equation. If we look, so velocity acceleration similar to our velocity versus acceleration graph. Now the last graph is left. Since there are 6 equations, we have the last graph, which is acceleration versus position. If you look into acceleration versus position, we got the equation as acceleration was written as minus of omega square x. क्या लिखा हुआ है? तो अगर मान लो अगर हमने एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाने के बारे में सोचा, अच्छा, इज दिस इज समथिंग सिमिलर टू फॉलो y is equal to minus of x or not graph? So that means the graph will be something like this. Okay, so acceleration versus position graph is a linear graph. कैसा है? Linear graph in such है. जबकि हरदम हमने क्या देखा है? कर्विकल होता है काइनेमेटिक्स में, है ना? ये बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है. Sure. So can we move ahead? So we got to know so many things about the graphical analysis. Something even we related how the SSM occurs and what are the different relations that we can understand. इसलिए बहुत सारी चीजें हमने देखी. So we'll move ahead and we'll talk about that in a too much greater sense. अब ध्यान से देखो. तो
अच्छा, अब जब हम इस xt वर्सेस 80 ग्राफ पर आते हैं, तो क्या मेरा हर हर पॉइंट एक 2 पाई टाइम पीरियड के बाद सब कुछ रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा? कर रहा है ना? तो इफ एवरीथिंग इज रिपीटिंग आफ्टर अ 2 पाई टाइम पीरियड, लेट अस जस्ट define what is called as time period of SHM today. अभी तो मतलब बेसिक्स हो रहा है, मतलब टाइम पीरियड ऑफ SHM, ठीक है? लेट अस जस्ट टॉक अबाउट द टाइम पीरियड। तो अगर ध्यान से देखो, तो एवरीथिंग इज रिपीटिंग, एवरीथिंग, लाइक इफ आई राइट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, फाइव हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, फाइव को जीरो मान लेते हैं, है ना? और v को लिखा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, या cos ओमेगा t, या एक्सेलरेशन को लिखा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ध्यान से देखो, ये सारी की सारी ग्राफ्स एक पीरियोडिक फंक्शंस है। क्या फंक्शंस है? क्यों पीरियोडिक फंक्शन बोला? क्योंकि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू सेल्फ रिपीट इटसेल्फ। इज दैट क्लियर और नॉट? कब रिपीट करेगा? अगर ध्यान से देखो तो साइन कॉस साइन ये सारे के सारे हैं, इनकी जो पीरियड होती है बेटा, ये कितना होता है? 2 पाई एंगल्स का होता है। कितने एंगल्स का? दैट मीन्स these functions, these values will once again repeat after 2 पाई एंगल्स, है कि नहीं? ठीक, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक पर्सन एक घर से स्टार्ट हुआ, ठीक है? एक पर्सन यहां से स्टार्ट हुआ, वो चला कुछ देर, फिर जब दोबारा रिटर्न आ रहा है, तो इस जो ये जो गैप स्पेंड हुआ, दोबारा रिटर्न आके ये कुछ ना कुछ एक एंगल थीटा का गैप होगा या नहीं होगा? मान लेते हैं हम थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, दिस इज दैट एंगल आफ्टर विच द पर्सन इज गोइंग टू सेल्फ मीट विद हिमसेल्फ और नॉट। और मतलब जैसे मान लो एक चाय टपरी से क्रॉस किया, तो ये वही टाइम है दैट आफ्टर विच ही विल वंस अगेन, एवरी टाइम ही विल क्रॉस दैट चाय टपरी और नॉट, है ना? तो बेसिकली हमने बोला कि लेट अस जस्ट डिफाइन दिस, दैट एज वी नो दैट this is that angle, 2 pi is that angle where, yeah, uh, that angle, you just write that, where the particle meets again and again, isn't it? Is that clear? और इसीलिए इस 2 पाई को ध्यान से देखो, तो साइन की जो ओमेगा टी है, मतलब आफ्टर हर 2 पाई एंगल इट इज वंस अगेन गोइंग टू गेट द सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वैल्यू ऑफ एक्स। सो दैट इज व्हाई साइन ओमेगा टी मींस ओमेगा टी को बोला गया कि बेटा, एज यू नो दैट आफ्टर एवरी टाइम यू आर गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। सो अगर हम एक टाइम के बारे में बात करें, तो मींस लुक ओवर देयर, द साइन वैल्यू इज टेकिंग how much values? Omega into capital T is equal to 2 pi to self repeat itself or not? तो इसीलिए ये जो स्मॉल टाइम है, इसको हमने क्या चीज में चेंज कर दिया? कैपिटल टी में, बिकॉज आफ्टर एवरी 2 pi it is going to self repeat, we are going to get the same thing। और इसी चीज का नाम दिया गया क्या बेटा? टाइम पीरियड। क्या नाम? ठीक है? तो टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड इन एनी काइंड ऑफ एसएसएम was defined as 2 pi by 2 pi by omega। is that clear or not? ये वही टाइम है जिसके बाद हम जहां से भी गुजरते हैं वहां दोबारा मिलते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। ठीक है? और इसीलिए टोटल ओमेगा टी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कैसे के बराबर होनी चाहिए? 2 पाई। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? और अगर हम इस ओमेगा को लिखें, तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई बाई टी। और इसी ओमेगा का नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बिकॉज 1 बाई टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट?
You got it? So this is where omega was defined. That omega is called as angular frequency because it is related with the total angle of the oscillation, which is 2 pi. मजा आया? ठीक है. So let us just uh, let us just deal with this a little bit. Let us just bring some good amount of question. थोड़ा समझते हैं कि हाउ टू डिफाइन एस एच एम. जैसे हमें मालूम चला कि अगर एस एच एम करना है तो उसकी इक्वेशन होनी चाहिए डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर. तो हम थोड़ा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके थोड़ा एक फेज डेवलप करते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स का भी. लेट अस जस्ट डेवलप सम रिलेशंस ऑफ द न्यूमेरिकल्स so that we can understand it. Is that clear or not? ठीक. तो एक बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि if a force F is equal to 3x plus 3 acts on a particle acts on a particle, then if then describe its motion. बताओ तो क्या force F is equal to 3x plus 3 will be able to provide the SHM? आ जाएगा. सोचो अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या डिफाइन किया था. कौन से फोर्सेस हमें एसएसएम दिला सकते हैं. हमें रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए ना, जो नेगेटिव मतलब जो अपने को पीछे की ओर खींच सके, है कि नहीं. ध्यान से देखो इस इक्वेशन को. अगर तुम ध्यान से इस इक्वेशन को देखते हो तो ये जो फोर्स है, इफ द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, कहां जा रहा है. So let's suppose if I put x is equal to plus 2, force is what? 3 into 2, that is 6 plus 3, which is 9 newtons or not. If I put x is equal to minus 2, then the force is still, force is what? Negative or positive? Minus 6 plus 3, that is minus 3 newtons or not. मतलब इसका मतलब क्या हुआ. अगर पार्टिकल आगे जा रहा है, अगर पार्टिकल यहां पर है तो ये फोर्स क्या कर रहा है, पार्टिकल को आगे की ओर भेज रहा है ना. और जब पार्टिकल यहां पर है तो ये फोर्स कहां लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है ना. तो ये is a attracting force. So how come the particle will perform SHM? So the particle does not perform SHM for this. Okay. So only the equations which are f is equal to minus of kx, f is equal to minus some constant k into x will only give us SHM. Is that clear? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही. ठीक है. तो हरदम ये बात याद रखा करो कि जब भी माइनस ऑफ के एक्स है वही तुम्हें एसएचएम प्रोवाइड करने वाला, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट अ एसएचएम. ठीक है. चलें तो आगे बढ़े. बोल रहा है एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल जो है, मान लो ये इसकी एक मेन पॉइंट हो गई, सॉरी एक्सट्रीम पॉइंट. ये इसके मेन पॉइंट हो गई है ना. अब ब्लॉक जो है एट t is equal to 0 started from one of the extreme point, positive extreme point, right or not. So the SHM starts from here. Write the equation of SHM. बताओ SHM का इक्वेशन क्या हो. In SHM equation is only one, that is xt time, means position time equation. If anyone asks explicitly about SHM equation, you have to just give the xt time equation, right or not. और मान लो ये जो एम्पलीट्यूड है एक्सट्रीम पॉइंट है, इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है बेटा, ए है.
बताओ। ए साइन पाई, थिंक। अच्छा ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था, एक्स टी इक्वेशन क्या है, एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। ये है ना टोटल इक्वेशन वेयर एक्स नॉट बाई ए साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए वाज कॉल्ड एज पाई। बोले यार, है ना। ध्यान से देख, हम t इज इक्वल टू जीरो मीन पॉइंट से जो t इज इक्वल टू जीरो का जो डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो कितने एंगल्स का है, ऑलमोस्ट अराउंड, या फिर मान ले एम्पलीट्यूड a का है ना, एम्पलीट्यूड यही का है ना। सी, x naught displacement is how much, it is exactly equal to amplitude a, so right xt is equal to, अगर हम phi निकालने की कोशिश करें तो phi की वैल्यू क्या आएगी, sin इनवर्स x नॉट की वैल्यू एम्पलीट्यूड a डिवाइड बाय हाउ मच a, तो sin इनवर्स कितना आया, 1। sin इनवर्स कितना आया, 1। sin इनवर्स, sin की वैल्यू 1 कब होती है, हाँ हाँ, when the angle is pi by 2। कितने एंगल्स पर होता है, पाई बाई 2। कितने एंगल्स पर, पाई बाई 2, ऐसा होगा क्या। अब देखो, अब ये बड़े अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें पूछ दिया अचानक से, मैं सोचा था इजी क्वेश्चन है बट ये हार्ड क्वेश्चन है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पूछा है, ध्यान से देखो। तो जो साइन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है ना भाई। ठीक, तो हेलो कंचन। सो बोल रहा है कि इफ आई लुक ओवर हियर एज वी नो दैट फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो साइन थीटा की वैल्यू कब 1 होती है, 90 डिग्रीज पर। बट एक टाइम पीरियड में दो बार ये 90 डिग्रीज है ना, एक बार पाई बाई 2 और दूसरे बार 3 पाई बाई 2 है ना। अब बताओ कौन सा इक्वेशन सही है, कौन सा हम मानेंगे, पाई बाई 2 मानेंगे या 3 पाई बाई 2 मानेंगे। एक बार जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू वो कितने बार है, दो बार, एक पाई बाई 2 पे और कितने पे, 3 पाई बाई 2 पे। तो अगर हमने मीन पॉइंट से होके एक्सट्रीम पॉइंट पर आए और किधर की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट की ओर, किधर की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट की ओर, देन टेल मी which angle I should use, pi by 2 or 3 pi by 2? Why 3 pi by 2? Coming negative 1, but that's the graph of position time. देखो इसका अब मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे। अच्छा मान लो अगर मैंने स्लोप ड्रॉ कर दिया तो that slope tells us about what, velocity of the graph or not, yes. So if I draw the slope, once again you will get that the slopes are actually parallel to the x-axis, because at 3 pi by 2 and all my slopes are maximum value, isn't it. So now once again, what is that? So this was the thing was how to deal with this kind of question, how to deal with this kind of question, then you have to just draw a velocity time graph। क्या बनाना है उसके बाद, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनानी पड़ेगी तुम्हें। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसी होती है बेटा, कुछ इस तरह से, है ना। ठीक, ये कौन सा एंगल है, जीरो, ये क्या हो गया तुम्हारा, पाई बाई 2, ये क्या हो गया, पाई, और ये क्या हो गया, 3 पाई बाई 2। इज दैट क्लियर और नॉट। तो ध्यान से देखो, एट t इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इज नेगेटिव और पॉजिटिव, at t is equal to 0 नेगेटिव। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो वेलोसिटी कब नेगेटिव है, पाई बाई 2 पे है या 3 पाई बाई 2 पे है, ये तो जीरो हो जा रहा है बे, वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट जीरो ना ओवर देयर।
बट इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो ध्यान से देख, अगर मैं इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर ध्यान से देखूं तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, हम कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स पाई एंगल्स। तो इसकी स्लोप इधर होगी, इसकी स्लोप कहाँ होगी, ऊपर। तो बेसिकली वेलोसिटी जो है नेगेटिव कब होने की कोशिश कर रहा है, पाई बाई टू एंगल्स पे कर रहा है ना। तो दिस इज वाई पाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पाई बाई टू के बराबर। कैसे के बराबर होगी, पाई। See, over here, the velocity is negative at what time? First instant of time or not? ध्यान से देखो, when the particle will return back to this point, the velocity will be towards positive direction. बात तो समझ में आया ना। तो वेलोसिटी फर्स्ट इंस्टेंट पे कब नेगेटिव हो रही है, पाई बाई टू पे जीरो हो रही है। तो आंसर क्या हो गया, पाई बाई टू। बस बात खत्म। इज दैट क्लियर? We will talk about that. See, the point was, even we can talk from the xt graph. मैंने यही ट्रिक बनाया था। अगर ध्यान से देखें तो xt ग्राफ में ध्यान से देखो तो पहली बार जो जो ये वेलोसिटी है, ये नेगेटिव या फिर कुछ भी हो, ये वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पे तो जीरो होती है। तो पहली बार जीरो कब हो रही है, व्हेन इट इज एट पाई बाय 2। सो दैट इज व्हाई we are going to consider xt is equal to a sin omega t plus pi by 2. As in a normal way, or as in a normal convention, we say that we always starts towards right direction of the motion। ठीक है, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ध्यान से देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन क्या आएगा, एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। और अगर मान लो यहां से स्टार्ट होता तो क्या लिखते, एक्स टी इज इक्वल टू, फॉर द सेकेंड केस, ए साइन, नहीं माइनस नहीं, माइनस तो एब्जॉर्ब वही कर ले रहा है, थ्री पाई बाई टू। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक, चलो। तो इसका एक 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 सिंपल फॉर्म मैं तुम्हें और बता दे रहा हूँ। यू विल गेट टू नो फ्रॉम दिस इन अ मच मोर ग्रेट सेंस। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। ठीक है, एक ट्रिक पूरी की पूरी डेवलप कर देगा। मान लो ये एक्स टी हो गया, सॉरी एक्सट्रीम पॉइंट हो गई, और ये हो गया एक्सट्रीम पॉइंट जिसकी एम्पलीट्यूड है ए और ए। अच्छा, अब जो पार्टिकल है ना, वो मेन पॉइंट से कहाँ स्टार्ट किया, हमें मालूम है कि हम अगर राइट जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, इतना मालूम है ना। So let's suppose the block which was kept at the main point starts to move towards left from the main point। किधर की ओर जा रहा है, at t is equal to 0। Then the question is, write the SHM equation। बताओ। Write the SHM equation। Phi का value has to be, means, yeah, so x naught is how much, 0, so phi is also how much, 0। That's great, but where we are going, we are going towards left। That's the biggest problem now। Look over there, ध्यान से देखो, you will say that pi is 0, but actually it is not 0। Because, sorry, wait, do not say that x naught is 0। It's not say pi naught is 0 also। We are saying x naught is 0। So look over here. Why we can't say pi is 0? Because if x naught is 0, we do not know where the pi will be 0, because it is sin inverse x naught by a। Are you able to get me or not? बहुत लोग इसको क्या बोलेंगे, फाई की वैल्यू 0 बोलेंगे ना। मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फाई क्या है, फाई इज इक्वल टू, अगर हम साइन इनवर्स को इधर लेकर आए तो ये क्या, सॉरी, अगर हम दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दिए तो इक्वेशन क्या आएगा, साइन फाई इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई ए ना। तो ये एंगल्स के टर्म्स में है ना बेटा। तो अगर मान लो एक्स नॉट की वैल्यू 0 है तो साइन की जो वैल्यू 0 कितनी बार होती है टाइम पीरियड में, दो बार, एक बार 0 पे और दूसरी बार 2 पाई पे, सॉरी, और एक बार फिर बीच में भी होती है, पाई पे भी होती है। इज दैट क्लियर?
अब बात समझ में आई? हाँ, एक बार टाइम पीरियड में साइन की वैल्यू, ठीक, एक तो जब स्टार्ट किया, दूसरी बार किसी ना किसी एक स्ट्रीम या मेन पॉइंट पे होगी, और एक तीसरी बार जब वो रिटर्न कंप्लीट करेगा, जब वो इनिशियल पोजीशन पे दोबारा आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो एक्स नॉट की वैल्यू जीरो है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट में जाना है। तो ध्यान से देखो, अगर हम तीनों पॉइंट के ऊपर स्लोप ड्रॉ किए, जीरो पे, पाई पे, और इसके ऊपर, तो किसकी किसकी, हाँ, वेलोसिटी किसकी किसकी पॉजिटिव है? जीरो और टू पाई, लेकिन नेगेटिव किसकी लिए है? पाई एंगल्स के लिए। यस, तो पाई की वैल्यू क्या आ गई? पाई के बराबर, इसके बराबर। तो इक्वेशन क्या है? एक्स टी ए साइन, जीरो लेना पड़ता, फर्स्ट जीरो लेना पड़ता है ना। हाँ, अगर यहाँ से राइट साइड जाता तो एक्स नॉट की, यहाँ पे फाइव की वैल्यू क्या हो जाती? जीरो। ध्यान से देखो, क्योंकि जो एक्स नॉट जीरो है, जीरो पॉसिबिलिटी कितने जगह पर है? तीन जगह ऊपर है। मतलब इसकी जो वैल्यू, साइन फाइव की जो वैल्यू जीरो आ रही है, वो तीन जगह पे है। जीरो पे है, पाई और टू पाई है ना। तो द क्वेश्चन अराइजेस वेयर आई शुड कंसीडर। तो जीरो पे पॉजिटिव है, तो हम क्या मानेंगे? फर्स्ट टाइम, क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो पे हम फर्स्ट टाइम राइट की ओर जाएंगे ना, तो इसलिए हम पहला वाला टर्म मानेंगे। आर एबल टू गेट मी और नॉट? टू पाई। इज दैट क्लियर? तो इक्वेशन क्या है? एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, बिकॉज एट पाई, क्या क्या फाइव, got it? First of all, let us just clear into our mind that phi is a angle. Phi is a angle because it is when phi is equal to 2 pi, when we say that the particle is going to start its motion towards right after completing one cycle, then the phi will become 2 pi. Got it? तो ध्यान से देखो, अपने पास कितने टर्म्स हैं? दो तीन टर्म्स हैं। सबसे पहले समझना है कि हम लेफ्ट या राइट जाए तो हमें मालूम होना चाहिए एक्स नॉट की वैल्यू। सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? एक्स नॉट। I'll put that x naught value, as I know I started from x naught is equal to 0, so I put it over here 0. I got sin phi is equal to 0, but the question arises that how, at what phi angle this 0 is possible. So this 0 is possible for three intervals, 0, pi and 2 pi. If I draw the sine graph, then to check whether where this velocity, where this particular uh, graph is going to exist, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, हमने क्या ड्रॉ किया? स्लोप। स्लोप ड्रॉ करने से हमें उसकी वेलोसिटी मालूम चल गई। हमें बोला गया था कि पार्टिकल की वेलोसिटी किधर की ओर है? पहले लेफ्ट की ओर। मतलब अगर स्लोप, अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। अब ध्यान से देखा जाए, अगर हमने स्लोप ड्रॉ किया तो नेगेटिव स्लोप, याद रखना हम जब भी लेफ्ट जाएं तो वेलोसिटी कैसे रहेगी? नेगेटिव। और जब भी हम राइट जाए तो वेलोसिटी कैसी है बेटा? पॉजिटिव। So as I found out that at pi angles the velocity direction is negative, and that's why we considered that basically sin phi must be considered as pi. क्या कंसिडर करेंगे उसको? पाई। तो एक्स टी की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई क्या होता है? अगर प्लस पाई देखे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू तो नेगेटिव होती है, तो क्या आएगा? माइनस ए साइन ओमेगा टी। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन एसएचएम का माइनस ए साइन ओमेगा टी। सो व्हेन वी स्टार्ट from at the mean point towards left, the equation of SHM is given as minus a sin omega t. Yeah. And when we go towards right, we say that the equation is given as a sin omega t. तो राइट के लिए a sin omega t है, लेफ्ट के लिए माइनस a sin omega t है ना। Yes, directly you can. No, we can't write it directly. We have to understand this because we are going to do more questions related to this. ठीक है, एक क्वेश्चन दो अच्छा सा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी पीजी है, आराम से बन जाएगा अगर तुमने दिमाग लगा दिया तो। बोल रहा है once again SHM is there.
एक्सट्रीम पॉइंट है, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स जिनकी एम्पलीट्यूड कितनी है बेटा। एक्सट्रीम पॉइंट को अब हम एक्सट्रीम पॉइंट लिखना बंद कर देते हैं। लेट अस जस्ट स्टार्ट राइटिंग एक्सट्रीम पॉइंट्स एज माइनस ए एंड प्लस ए। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पॉइंट, है ना। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ, पार्टिकल मतलब मीन पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा, मीन पॉइंट दिया हुआ है ना। बोल रहा है कि जो पार्टिकल है टी इज इक्वल टू जीरो, द ब्लॉक, the block starts from here at t is equal to 0. Let us just call it, I'll give the coordinates a by 2. Let us just make it a by 2. It is going towards left. Then the question is, write the SHM equation. आसान है। Write the SHM equation. So that's correct. Our x naught initial gap, if we once again पहले first step क्या है कि हमारा equation of first equation क्या है, ये SHM equation हमें मालूम है कि we can write what is that, x of t as a sin omega t plus sin inverse by a। हम लिख सकते हैं ये क्या है, अपना SHM इक्वेशन है ना, पाथ का। अब हमें x नॉट देखना है, x नॉट होता है इनिशियल गैप फ्रॉम द मीन पॉइंट, तो मीन पॉइंट से इनिशियल गैप है कितना, या सो एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो क्या चीज के बराबर है, ए के बराबर, कितने के, सॉरी a by 2 के बराबर है। So if I write, as we know that phi is written as sine inverse x naught by a, ठीक है। तो basically we can write sine phi is equal to x naught by a। x naught की वैल्यू है a by 2 divided by a, तो कितना आया, 1 by 2 आया ना। अब sin phi की वैल्यू 1 by 2 कब हो सकती है, there are many values। sin phi is equal to 1 by 2 if I took the graph, ठीक है, ध्यान से देखो। तो एकदम लास्ट में बताऊंगा, कुछ भी डाउट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो सी द स्टेप्स। बोला कि sin phi is equal to pi by 2, 1 by 2। दैट मीन्स इतना तो मालूम है कि sin that is almost exactly equal to 30 degree, sin 30 is 1 by 2 or not, but there are many such 30s are possible, ध्यान से देखो। so first 30 will be possible over here, isn't it? so sin phi is equal to अपन का 1 by 2 जो है, या फिर प्लस a by 2 जो भी बोलो, तो that is possible for many points। first one is this point and second one is this point, isn't it? तो देखो, अगर अगर मैं तुमसे कभी भी इस तरह क्वेश्चन पूछता हूँ, तो द फर्स्ट टास्क वाज टू राइट द sin phi इक्वेशन। लर्न द स्टेप, फर्स्ट टास्क राइट द sin phi इक्वेशन, देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin phi with respect to position। क्या निकालो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin phi with respect to position, and then whatever the value is there, just like over here it is 1 by 2, draw a horizontal straight line of 1 by 2। क्या करो, horizontal straight line बनाओ, क्या चीज का, 1 by 2 का। count the intersections, you have two intersections now, 1 2, how many intersections are there? So sin phi is equal to 1 by 2 is only possible in first cycle for two values। कितने values के लिए possible है, sin 30 डिग्री which is pi by 6, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगी, मतलब 1 minute, let me just clear it, I'll tell you a trick how to do it। so first reason is just simple, second reason is
पाई माइनस थीटा, पाई माइनस रिक्वायर्ड थीटा। ठीक है, ये रीजन यहां से लेके यहां तक होता है पाई प्लस थीटा का, और ये रीजन यहां से लेके यहां तक है 2 पाई माइनस थीटा का। कितने का है? ये ट्रिक सब मैं बता दे रहा हूँ लिखने का, 2 पाई माइनस थीटा का, where theta will be given as the first initial angle which is we are providing, which is pi by 6। ठीक है, तो ये जो एंगल है कितना है? पाई माइनस पाई बाई 6। हाउ मच इज दैट? 5 पाई बाई 6। इज दैट क्लियर और नॉट? Is my 5 pi by 6 almost equal to 150 degree? Check it. Yeah. So the so that means now after writing all these angles, the third step is draw a slope over all those points. क्या बनाना है? Slope. Yeah. So look over there. If we see that the particle is going towards left side or right side, the particle is going towards left, means the velocity is towards negative. I have told velocity is negative when we go towards left, ठीक है, and velocity is positive when we go towards right. See the slope, which slope is negative? Basically for 5 pi by 6 the slope is negative, that means the phi must be taken as 5 pi by 6। क्या मानेंगे अपन? और x का इक्वेशन क्या आएगा? a sin ओमेगा t प्लस ये तो अपन का फाई है ना टोटल, तो किस एंगल के लिए पॉसिबल है? किस एंगल फाई के लिए पॉसिबल है? विच इज 5/6। मेरी बात समझ में आई या नहीं है? आसान है, ठीक है। एक और क्वेश्चन किया जाए। सॉरी, 1 मिनट, लेट मी राइट, इट इज 5/6, इजंट इट? ठीक, एक और क्वेश्चन दूं। नाउ आई थिंक यू विल बी एबल टू राइट इट, राइट द इक्वेशंस इन अ मच मोर इजी फॉर्म। माइनस ए प्लस ए, mean point, particle starts from here at t is equal to 0, mean point is 0, so this is minus a by root 2। how much is that? And going towards, no, and going towards right with velocity, some velocity v naught at that time. Write the equation of SHM। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे ड्रॉ करके नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे एग्जाम में? स्टेटमेंट वाइज मिलेंगे। कैसे? अ पार्टिकल स्टार्ट्स एट माइनस ए बाई रूट टू डिस्टेंस फ्रॉम मेन पॉइंट एट टी इज इक्वल टू 0 एंड गोइंग टुवर्ड्स राइट, गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, कुछ कुछ टफ टफ टाइप का स्टेटमेंट रहेगा, उसको कन्वर्ट करना है इस तरह के डायग्राम्स में। ओके, ठीक है। हम्म। हाउ मच वी आर गेटिंग? साइन माइनस 1/2। थिंक वन सेकेंड, let us just see. So once again, xt equation is a sin omega t plus sin inverse x नॉट बाई a, यही है ना? ठीक है, जो कि अपन का फाई वैल्यू है। फाई को फिर से लिखा, तो इक्वेशन आया sin फाई इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई ए। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? माइनस ए बाई रूट टू, तो ये क्या आएगा? -1/√2, यही है ना एक्स नॉट? ठीक,
तो अब ध्यान से देखो, अपन को क्या थर्ड स्टेप क्या था, ग्राफ बनाना है साइन, ड्रॉ इट ओवर हियर। दिस इज जो भी लिखना है, और ये साइन पाई है ना। अभी साइन पाई की वैल्यू क्या है, -1/√2 है ना। तो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी, नीचे वाली हो गया ऊपर वाली, नीचे हो जाएगा। ये -1/√2 हो गया। कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स है ना। ध्यान से देखो तो 1/√2 थीटा की वैल्यू π/4 एंगल्स पे होती है ना। साइन 1/√2 इज एट 45 डिग्रीज, इजंट इट। सो ये जो दोनों इंटरसेक्शन का वैल्यू होगा, इसका क्या बताया था मैंने, पाई प्लस π/4। हाँ हाँ, it's plus. If it is beyond that pi, it is plus. And this value is 2 pi minus pi by 4. ये वैल्यू कितना हुआ, 5 pi by 4। ये वैल्यू कितना हुआ, 7 pi by 4। यही हो रहा है ना। Now next task was to draw the slope. This is a negative slope, this is a positive slope. Where the particle is going, V naught, which is a positive value or not. So which slope I should consider, the slope of positive value must be considered. Is that clear or not? तो स्लोप कैसे है यहाँ पे, पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आ गई, 7 pi/4। इज दैट क्लियर और नॉट। तो आंसर क्या आएगा, फाई की वैल्यू हमें क्या कंसिडर करनी है, तो साइन फाई इज इक्वल टू -1/√2 इज पॉसिबल फॉर टू वैल्यूज ऑफ फाई, विच इज 5 pi/4 एंड 7 pi/4। लेकिन हम कंसिडर कौन सा करेंगे, तो xt इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 7 pi/4। दैट्स माय इक्वेशन ऑफ एस। मजा आया नहीं आया, ठीक है। So this was all about your this topic which we dealt right now. So I think we did a good amount of things today also. Okay, let me just stop the recording.